what we are going to have today is Poisson's brackets. Okay. So it's also how we can formulate these coordinates, position, momentum and time. The way Hamiltonian mechanics में हमारे पास क्या variables थे? Two, एक position था, momentum या momentum basis. And in case of Lagrange, we had coordinate and velocity. So how we can formulate our equations of motion? First, how we set a Lagrange or how we set a Hamiltonian. Then we can solve a given from Lagrange equation of motion or Hamiltonian equation of motion. So in this same way, अगर हमारे पास, for example, in today's lecture, ये जो आज का lecture है, it's not only important from the point of view of classical mechanics, because once you go to quantum mechanics, so the transition of classical mechanics to quantum mechanics is via through these Poisson brackets. So इसका जो formalism है ना, it's also very much important, not only for classical mechanics, how we can generate equations of motion. And once we make a transition to classical mechanics to quantum mechanics, how this becomes important. So there's a thing that comes after it. But the point to emphasize is we should just very much master this formalism. So before mastering this formalism, थोड़ा सा इसका algebra है, algebra को master करना पड़ेगा. Okay, you should be able to manipulate symbols. Formalism, उसको कहते हैं bracket formalism. क्या कहते हैं? So what is that? So अगर हमारे पास f function है p, q, t, so these are position, momentum and time. ठीक है? और function of इसका function है position, momentum and time. And अगर आप जिस तरह हमने कहा था कोई भी फंक्शन है, इट्स विल डिपेंड अपॉन अगर एक डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, so you can express a function in terms of position, in terms of momentum, in terms of जो भी है वेरिएबल्स है. So हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, how the function varies explicitly or implicitly in terms of time, if it's dependent on time, ये तो एक है how the function changes with time. And if you want to write this function in terms of position as well as momentum, so you can also write it like this: 2g dot plus df by dt k dt dot. ठीक है? ये है ना जो k by dt है, it is again df by dt. फर्क नहीं पड़ेगा ना, dp by dt ये कट जाएगा. So the point is only to mention that this function, since it is dependent upon f, q and t, तो t तो हो गया पहले, and other we can also write it in terms of other two variables. ठीक है? We can write it like that. देख सकते हैं कि नहीं? You can see. So if you write it like this, तो further we can आप यहाँ पर जो हमारी कल की, if you remember how we define position and momentum coordinates. If you remember the Hamiltonian, you just have some rules. We write it as plus q dot of dpi. So if in terms of p and यहाँ पर आप देखते हैं, wrote it like this. And further जो हमारा position coordinate है and momentum coordinate है, we write it as this. I dot minus dh by dt. ठीक है? Now what we are going to do? ये q dot है, we substitute here, and p dot के बदले substitute करेंगे here. ठीक है? Our definition of momentum and position in terms of the derivative of the Hamiltonian with regard to position coordinate and with regard to momentum coordinate. So this substitution will do here, and here. And if you do it here, आप जगह लिखो, इसमें एक तरफ माइनस है, एक प्लस है, so it will come out to be like this. It will come out to be, it तो अपना है df by dt plus this
इसके बदले हम इक्वलिटी एंड सिंस इट्स माइनस माइनस बाहर आएगा सो वी राइट dh by dq इसके बदले एंड ये अपना हो आएगा. Okay. So if you write it, so you see it's sort of you can write it जैसे आप commutator है, commutator ऐसे लिखे ना, जैसे PQ है, उसको आप ऐसे लिखते हैं PQ minus. अगर एंटी commutator होगा, so you write PQ plus. So the commutator can be like this as a bracket. Okay. So this equation motion जो हमारे पास आएगी, so it will come out to be df by dt हमारे पास आएगा. एक तो अपना है and derivative for the function, total function which is dependent upon position, momentum and time. It will depend upon if the upper time dependence है and how we can write this bracket. Bracket को हम ऐसे लिख सकते हैं HF, where HF is going to be this function. यहाँ है Hamiltonian regard position coordinate, Hamiltonian है ना ये PQ and QP. So we write this in terms of brackets as if the derivative of Hamiltonian and the derivative of the function. जिस पर ये सब चीजें डिपेंडेंट हैं, क्रॉस क्रॉस इट, you can write it in shortened form इस ब्रैकेट में कहते हैं. तो इसी को जो इक्वेशन है ना, दिस एक्सप्रेशन या इसको हम कहते हैं पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्वांटिटीज F and H or H or H. Okay. So this is another way of writing this equation, which is the point is in terms of, and the way when we have to find the equations of motion. Equations of motion and integrals of motion, the constants of integration. Which will correspond to those initial conditions. जहाँ से particles start किया था. If the particles started from the rest or zero, the integrals will be. So in the same way, जो हमारे पास है, those functions which dynamic value which may constitute motion or known as integral motion. जो dynamic values which remain constant, उनको कहते हैं integrals of motion. Okay. Those constant, those dynamic variables which remain constant during motion are known as integrals of motion. So what do you mean by that? आप देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, अगर there is no explicit dependence on time function, ठीक है? जैसे मैंने कहा था एक्सटर्नली लोड ऑब्जर्विंग दिस सिस्टम, तो इंटरनली क्या हो रहा है, एक पार्ट यहाँ से जा रहा है, वहाँ से आ रहा है. So this variable will tend out to be zero or constant, ठीक है? So you can write it as, so left hand side में this you can write it to हमारे पास अगर no explicit dependence on time है, जिस जो हमारा ये पॉइंट है इसका you can write it like that, ठीक है? और since this is equal to zero, okay, and if the integral or the motion does not explicitly depend upon time, या तो implicitly depend नहीं कर रहा है, explicitly depend नहीं कर रहा है time पे, तो this bracket HF again काम होगा. पहले हो गए जो सब वेरिएबल्स PQT, ठीक है, which is dependent upon some function, so which is not dependent upon time. दूसरा है intrinsically this function is also not dependent explicit on time. So कहने का मतलब ये है कि we have a bracket, Poisson bracket, which is constant or which is zero. That it will correspond to the quantity is conserved. The Poisson bracket is conserved or equations of motions are conserved. ये उस वही बात कहनी है और दूसरे तरीके से same thing different. Why do we want to हम इसको ऐसे क्वेश्चन ब्रैकेट फॉर्म में इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में क्यों लिखते हैं, ये क्वेश्चन आता है. अगर हमारे पास वैसे तो इसकी अपनी कुछ फवाइद है ना, इट हैज सम यूटिलिटी और हैज सम देयर सम यूज टू इट, हाउ वी कैन
is this, इसका algebra, which we are going to see. Algebra क्या है? So if we want to write two quantities f and g, तो इसमें यह है कि इंटीग्रल ऑफ द हैमिल्टोनियन इज जीरो, इंटीग्रल ऑफ द हैमिल्टोनियन इज, ठीक है, तो इट्स आल्सो कम्स। सो अगर f एंड g और two quantities, so Poisson bracket is defined as df by, देखो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा, df by dq, dg को अब यहाँ का df by dq and dg by dp, okay, that's it. You have dq minus 2ps. Now there are some couple of properties जिसका आप पढ़ लेंगे earlier classes, associative law, distributive law. Once you start in algebra, है ना, commutativity, या for example cross product में when you have vector addition, commutativity doesn't hold, a cross b is not equal to minus, so it's how we start in some algebra. This is why जो Poisson bracket है, will start, इसका जो commutator है, commutator of Poisson bracket, it has some properties, so which we are going to state, or you can थोड़ा सा pencil for them and you can just verify it. For example f of g, so f of g इसमें एक function है Hamiltonian, this function, so we denote it generally in terms of f and g. If it's f and g, so f of g is equal to minus g of f of, अब अगर आप इसको कुछ ये यहाँ लाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ये ना f g minus g f, it will be minus times g f minus, or it will be ये minus minus plus आएगा, you can verify it in a simple way, ठीक है? The point to show is that this is property one, so you can do the other one. So Poisson bracket में f, if you multiply bracket of with some constant, it will always be. So in the same way, f1 plus f2 into g, we can write it as f1g plus f2g, okay? In the same way, so you verify it, do the same, just write it rough in algebra. f1 f2g is equal to f1 f2g plus f2 f1g. यहाँ हमने मॉडल चेंज किया, f1 पहले लिया फिर दूसरी बार f2. So if you एक बार इसको खुद से कम्यूटेटर को यहाँ से निकालो, you see try to check out whether left hand side is equal to the right hand side. Or for example, if we take a partial derivative of this equation, partial derivative of this equation, तो जो हमारा Poisson bracket है d by dt of f of g can be written as, so this can be written as df by dt times g or plus f times dg by dt. Okay, so these are different properties of Poisson brackets. Now I have not said explicitly basically ये Poisson bracket ठीक है, but ultimately we are dealing with two coordinates. हम जो motion को describe करते हैं in terms of position and momentum as well as time. But since sometimes explicit dependence on time is not there, we can take this term 0 or only are interested in these things. So अगर हमारे पास ये है further if we want to write it further in terms of, sorry, it's done this side. So
जी हमारे पास जो होगा ना, इज वन ऑफ द मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, वन ऑफ मोमेंटम and coordinates. If it is momentum and coordinates, now we can do what? F of q की क्या आएगा? F of, so this function हम क्या करेंगे? हम ये जो है यहाँ पर, if you remember F q, so you will, अगर हम इसको एक को करेंगे तो हम सो एक को जो g फंक्शन है, g फंक्शन, हाँ दिस g, एक को आप मोमेंटम के साथ सब्स्टिट्यूट करो, एक को आप मोशन के साथ सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है? तो these commutators will turn out for position and momentum. देखो एक के साथ p करो, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक रहेगा, एक ही रहेगा, ये जीरो आएगा, so it will come out to be दूसरा दिया by dt क्या आएगा, and the second one will be दिया by dq की. I've done nothing. इसमें एक को मैंने g को सब्स्टिट्यूट किया p के साथ, यहाँ भी यहाँ, दूसरी बार इसको सब्स्टिट्यूट किया q के साथ. So it will the commutators, these two commutators का form आएगा ऐसे, ठीक है? So if it's like this, if it is like this, तो इसका मतलब क्या? Further can you write it further? अब आप ये थोड़ा सा सुना है क्रोनॉटिकल डेल्टा की बारे में? क्या फॉर डेल्टा k is L, है ना? K is equal to L, is equal to k is not equal to, so this property may be helpful here in the sense that अगर हमारे पास quantity है q I q k, तो अब देखो यहाँ पर dc के बजाय q I लिखोगे, ठीक है? ये है ना यहाँ पर q I, इसके बजाय q k लिखोगे, तो ये आएगा जीरो आएगा ना, d by dq you will see. तो एक को देखते हैं, for example, so df then dpk, इसको dqi by k, पहले लिखेंगे इसको it's like qi qk minus qk qi. तो इसमें पहला वाला टर्म क्या है हमारे पास? क्योंकि के बदले क्या लिखोगे आप? क्यू आई डी एफ बाई डी ई की क्यू आई डी क्यू आई बाई डी क्यू की मानी डी एफ बाई डी क्यू की, इसके बदले लिखेंगे डी नहीं क्यू आई क्यू की, हाँ आगे ना जीरो, हाँ आगे जीरो आया कि नहीं? ये डी क्यू आया, हाँ डी क्यू डी पी आया, हाँ डी क्यू हाँ. So what is basically you try to see it yourself. यहाँ पर क्या नाम चाहिए? ठीक है. So if you substitute this function f of p, या ये function है ना ये gr, ठीक है? एक को आप देखोगे in terms of you write it in terms of qi qk का commutator, so it will be zero, ठीक है? In the same way pi pk का commutator, the commutator of जो ये g quantity है ना, ये g quantity, ठीक है? You replace it in terms of coordinates only. अगर commutator दोनों variables है ना, we are substituting them only in terms of coordinates. तो जो difference of the commutator आएगा, that will be zero. Now if you substitute it not with coordinates, with two momentum, ये coordinate moment है, ये coordinate moment है, ठीक है? Still it will come out to be zero. अब difference कहाँ आ रहा है? Difference आ रहा है q की. So this is a subtle difference. Subtle difference है कि if you
put one of the coordinates as position, one of the coordinates as momentum. So sometimes if the pi is equal to qk, it will be, if k is equal to l, then it will be 1. If it's not equal to l, it's 0. So in the other two cases, the commutator will vanish if you have same momentum and same position, value of momentary position for this quantity of g. For this quantity of g. So if you have, it's a matter of just check it. Rough now you substitute it like this to us. You have एक साइड से pi लिखोगे क्योंकि यहाँ से gi के बदले आप लिखोगे p की, ठीक है। अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट इट dg के बदले आप लिखोगे एक साइड लिखोगे pi, हाँ दूसरे साइड से लिखोगे तो ये है ना dp के will cancel and dq के will cancel। तो यहाँ आपको d और p तो a to 0 आएगा, but if I is not equal to k, it will not necessarily commute, ठीक है। If delta is equal to k, then if it's equal to k, it's 1. So if it's not equal to k, then it is 0 for other values of k. थोड़ा सा at your place, you try to see this commutator, ठीक है। इस पर आप थोड़ा सा करो and try to just identify variables with regard to this commutator, with regard to this commutator. तो अब अगर ऐसा है तो further this entire thing इसको थोड़ा सा symmetrically भी हम एक और आइडेंटिटी है उसको कहते हैं जैकोबियन आइडेंटिटी। जैकोब जिसका आप करते हैं ना साइक्लिस्टिक प्रॉपर्टी वेक्टर्स में I j k is equal to k j I is equal to, so in the same way that property is simply like that. So if you have f and you have a Poisson bracket of two formulas, एक वैल्यू तो बाहर है, दिस इज Poisson bracket का ये अंदर है इसकी पोजीशन मोमेंटम वैल्यू उसका ये प्रोडक्ट which is represented by this, ठीक है। So you can also write it as you just verify it plus, so it will be equal to this is known as Poisson brackets for between three functions f, g and h. अगर तीन functions हैं, this identity will hold. We can prove it in 2 seconds में। आप हमारे क्लास होता नहीं है, तो इसमें पहले इसको लिखो, इसका लिखो g h minus f h g, उसका कम्यूटेटर इसके साथ यहाँ से कितनी टर्म्स आएंगी, यहाँ से कितनी टर्म्स आएंगी, फिर यहाँ से these all terms will cancel। अब देखो आप ये क्या करना है, better at the end it will come out to 0. So so this property हमारी कुछ it will be helpful for us. It will be helpful for us. अब ये है कि to prove the following results, the Poisson is a binomial homogeneous function of full derivatives f and g। अब हम करेंगे काम, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे। if we follow the book, सिंपलीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल if we try to write it in terms of d1 phi को ऐसे लिखेंगे g of phi and d2 phi को लिखेंगे in terms of h of phi। Let us correct the terms involving the second derivatives of f. The first bracket contains no such terms. तो ये हमको in terms of ये है ना linear homogeneous function। linear homogeneous function पता है किसको कहते हैं? You just take a C your differential equation में है ना homogeneous equation। ठीक है। So this commutator should not just इसमें second order derivatives नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर first order derivatives आएंगे तो आएंगे, क्योंकि ये देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना h of f, ठीक है, ये sometimes है मल्टीप्लाई f के साथ। यहाँ तो एक डेरिवेटिव है आपका, दो बार डेरिवेटिव है,
अगेन ये डेरिवेटिव आएगा बाहर से, तो इट विल बी नॉट समटाइम्स लीनियर डेरिवेटिव। अब वो ये जो डेरिवेटिव्स है ना, इट शुड बी अ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? सो ये कह रहे हैं सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव्स थर्ड ब्रैकेट में सिंबॉलिकली लिखिए। हम क्या काम करेंगे, जो सेकंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट को लिखेंगे सिंबॉलिकली, लाइक सिंबॉलिकली इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। ऐसे अगर हम ऐसे लिखेंगे देन जो हमारा ये है ना सेकंड टर्म, सो फिलहाल आप व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसका ये आएगा, इसका लॉजिक विल जस्ट ट्राई टू सी। सो कैन वी राइट दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को थर्ड ऑर्डर ब्रैकेट का फॉर्म हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ d1 phi एंड d2 phi। चाहे d1 phi इन टर्म्स ऑफ g and phi, d2 phi को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखेंगे तो जो हमारी ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, सो फर्स्ट इसको थोड़ा सा करेंगे आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको माइनस लाएंगे एच, ये है ना एफ जी के बजाय आप लिखेंगे जी एफ, इसकी वजह से माइनस आएगा, माइनस में बाहर निकाल। और नाउ वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ दिस जी एंड फाई, एच एफ को इन टर्म्स ऑफ फाई लिखेंगे। So that will become to d1 phi. So you can write it in terms of d1 d2 f minus d2 d1 f, or d1 d2 will be equal to minus d2 d1 f. So अगर ऐसा करने से क्या होगा, it's easy to see that this combination of linear differential operators cannot involve second derivatives of f, second derivatives of f नहीं आएंगे, such that जो d1 है ना, d1 can be written in terms of, and d2 can be written in terms of beta k beta dx. So actually we are trying to simplify the same thing. तो हम जो एक कम्यूटेटर है, in order it should not have higher order derivatives, more than 2 derivatives, हम we are going to simplify this second and third term in terms of function phi, and further at the end हमको x लाएंगे equation, and further इसका हम करते हैं, we write commutator in terms of f and g, we write it in terms of zeta and neta, if we follow the book। order change है, यहाँ zeta k x k है, यहाँ नीटा एक्स की, इनका डिफरेंस विल गिव द कम्यूटेटर का फॉर्म। सो यू विल सी d1 d2 जो होगा ना, इट विल बी व्हाट, d1 d2 किसके बराबर है, आपका आएगा शाबाश, ये आएगा जीटा k नीटा k d by d of x k d by dt of x k, ये दो बार आएगा तो इट विल बी d2 स्क्वायर। इसका अगर आप इसका कम्यूटेटर लेंगे तो एक तो वहाँ एक तो ये ऐसे टर्म आ गई, दूसरी क्रॉस टर्म वापस से आएगा, सो इट विल बी बीटा के बीटा के बाय dx के d by dx है। इसका you have done it for d1 d2, you can do it for d2 d1, only the order is changed। यहाँ जीटा के बीटा के आएगा और फिर नीटा के जीटा के आएगा वापस, नीटा के जीटा एल, पहला वाला टर्म सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, एंड सेकंड विल बी दिस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक द डिफरेंस ऑफ d1 d2 माइनस d2 d1, ये ना सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को इन टर्म्स ऑफ हमने लिखा क्या, d1 d2, तो so it will be पहली वाली टर्म में d1 d2, दूसरी वाली टर्म में, so difference of these two will give the commutator, this will give us commutator। इसका फॉर्म आएगा राइट, इसका फॉर्म
d2 minus d2 d1 d1 and आप ये देखना this minus this minus this एक तो पहली बार तो it will get cancelled तो second term will survive इसको इसकी माइनस इसका करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी ये सब्ट्रैक्शन और बाहर डी बाई डी ये कॉमन है तो ये बाहर है तो द इक्वेशन विल कम आउट टू बी फॉर zeta k d eta l by dx k minus beta k d zeta k by dx ये बाहर है is again an operator involving only single differentiation. इसमें एक ही हमारे पास operator involving only single differentiation. And the second order terms will cancel. The point to show is that जो ये if we formulate bracket formalism in terms of these parameters, ठीक है? तो इसमें third order derivatives भी आ सकते हैं. We will try to reformulate it in terms of acid, in terms of since it's a linear homogeneous equation, acid term is we can do it like this. And so the same force happen for G. अब ये रेस्ट again the problem if f and g are integrals of motion then f and g are constant. इसको हम कहते हैं Poisson's theorem. And Poisson's theorem की जो property है Hamiltonian को in terms of, for example, commutator of Hamiltonian f of g plus, now you change the order, f of g of h plus g of h of f is equal to 0. Okay? Hamiltonian का commutator is function f and g. Function को बाहर निकालो, Hamiltonian को अंदर. Okay, you can see it. So these are different ways of formulating the Poisson bracket. Poisson bracket के अंदर क्या है? F position, momentum and ये दो variables. ये basically equation of motion को हम कैसे लिखते हैं? एक है Newtonian form earlier class में जो आपने पढ़ा है absolute angle, फिर Lagrangian form, फिर Hamiltonian form, फिर bracket formalism. Bracket formalism में हमने these symmetric properties of these brackets जो है इसका algebra that becomes interesting for us. For example, आप जैसे a cross b is equal to minus b cross a, उससे आपको magnetic field है उसकी orientation पता चलेगी. ठीक है? Magnetic field is always perpendicular to the, but that is contained in the algebra of a cross. If a cross b is equal to b cross a, वो algebra फिर उसमें define नहीं होता है. ठीक है? So the same our algebra of bracket formalism suits how we can express equations of motion. ठीक है? That's the work of this case. अब ये कि f and if the integrals अब देखो h of g is equal to 0, h of f is equal to 0. This means h of f of g is equal to 0. This is required to the result. So if f and g are explicitly time dependent, then d by dt of f of g is equal to d by dt of f of g plus h of f of g. तो अगर हमने देखो ये पहली वाली इक्वेशन थी ना हमारे पास, तो अगर f and g हमारे पास दो फंक्शन है, ये पहली वाली इक्वेशन, we try to write it in terms of bracket formulas. और जो सेकंड टर्म में है, सेकंड टर्म में Hamiltonian embedded, ठीक है? फर्स्ट टर्म में हमारी ये मोशन डिपेंडिंग ऑन टाइम. So if you write it in terms of f g and h, अब ये प्रॉपर्टीज जो है so it's how we can verify it by Jacobian identity. So if this is this, then आप एक काम कर सकते हैं, you can write it like
further we can write it like this. d by dt plus h of f g plus f of dg by dt plus h of g. Now, थोड़ा सा ये algebra can you write it? You have to convince yourself. Can you write this function as this? अब convince कैसे करोगे? आप इसका commutative निकालो, h f g का और दोनों का commutative निकालो, and try to see whether it will come back. ये आएगा इसके बराबर कितना? So the book का काम है, he has only shown it. You can write it this way. As students, you have to verify it yourself. और रहा है कि नहीं? So why he is manipulating it this way? Because he wants to show इससे हमारी property verify होगी. Property verify होती है because we have shown there. हाँ, h of g given. ये ना ये it is 0 and this is also 0. So if it is 0 and this is 0, so from this we can say this function commutative d by dt of f of g is equal to d by dt g plus f times g, which evidently proves the Poisson's theorem. So I will just stop here reading the sentence of this book. वो कह रहा है, of course Poisson theorem does not always supply further integrals of motion. Since there are only two s-points, one of these s being the number of degrees of freedom. In some cases the result is trivial, the Poisson bracket being a constant. In other cases the integral is simply obtained as a function of original f(g). इसका मतलब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि if the Poisson bracket is simply 0, this bracket is simply 0, तो फिर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल है. बट इट्स ऑलवेज नॉट द केस. जहाँ ये 0 नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लीनियर मोशन पढ़ते हैं ना, बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इसमें निकालना नहीं है. आपको पता है 5 किलोमीटर पर सेकंड से बॉडी मूव्स, आपको पता होगा कि 10 मिनट के बाद कहाँ होगा. It's a constant limit. But if there is some change, you have to introduce integrals of motion. So if it is 0, so the equation is as simple. If it is not 0, तो Poisson bracket equation हमको solve करनी पड़ेगी. ठीक है? So the point to mention is that the way we express equations of motion in Newton's form, Lagrangian form, Hamiltonian form, or Poisson bracket. ठीक है? There are different ways of stating the same thing.